Good afternoon, all. How are you? Should we wait for some time so that all could join? Okay, ma'am. Ma'am, let's wait for some more time. Good afternoon, ma'am. Yeah. Let's wait for some more time, another 5 minutes. Right? Sure. Sure. Change, sir. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How are you all? Fine, ma'am. Ma'am, fine. We are waiting for some time so that all could join. Then we start. Okay, ma'am. We have to start the meet. Yes, ma'am, we should start now. Yeah. Good afternoon, all. कैसे हो आप सभी? मैं Good afternoon. Today, myself, Dr. Rekha Srivastav, along with my two colleagues, Dr. Manpreet Patel and Dr. Dipti Agarwal, are going to share you with some social issue related to women. ऐसे तो अभी हमारा जो हमारी कंट्री है, हमारी सोसाइटी है, काफी ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल वी हैव लॉन्ग वे टू गो when it is related to women's position in society. बहुत सारी चीजें होती हैं एक समाज को डेवलप करने के लिए, और उसमें एक मेन चीज है कि जब तक दोनों मेल एंड फीमेल दोनों को बराबर राइट्स या फिर बराबर सोशल पोजीशन नहीं मिलता है, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर सोसाइटी टू बिकम गुड और इन बेटर वे.
तो इस जो इशू है हमारे सोसाइटी में रिलेटेड टू फीमेल, दैट इज ऑल ऑफ जब मेल आर प्रेफर्ड इन एवरी सोसाइटी, सभी को चाहिए कि बेटा हो और बेटा अच्छे से उनके वो दे थिंक कि बेटा ही उनका सभी कुछ आगे के जो उनको समाज में स्टेटस है या फिर जो भी उनके इकोनॉमिक और हेल्प करना है वो बेटे ही कर सकते हैं। इसलिए दे ऑल ऑफ द people in the country they prefer कि बेटा ही हो। तो the females they are considered second grade citizen। और बहुत सारी दूसरी इश्यूज है रिलेटेड जो कि ये इसमें रहते हैं। वन ऑफ देम इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमारी जो फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है, जिसमें अराउंड 40,000 डॉक्टर्स हैं। Now, our president has started a campaign, that is DHEERA, to discuss or to take the limelight to what is violence against women. She has started the campaign 5 years back to tackle that issue. How to when there is some such type of incidents happen, how we can control it or how the situation to be dealt. So right now we will hear her voice. So please share the screen of madam. Hello. Dear friends, Foxians, and the women of my country, I am Dr. Shanta Kumari, President of the Federation of Obstetrics and Gynecological Societies of India. As a doctor and a woman myself, I have observed very closely how prevalent violence against women is across the strata of our society and the enormous impact it has on the health of our women. My theme for the year as the President Foxy is Foxy for all always, and DHEERA, Stop Violence Against Women. Dr. Shanta Kumari, who has relentlessly campaigned for the issues of girl child. I was happy to be the ambassador of Foxy Figure Ox in 2013, and I hope that me being an ambassador has motivated a lot of girls and many families. Violence against women is a serious human rights violation, leading to injury and sometimes even death. Unfortunately, 1 in 3 women experience some sort of physical and sexual violence during their lifetime. Violence in pregnancy is also widely prevalent, leading to unwanted pregnancies, unsafe abortions, neglected pregnancies with no antenatal care, all these contributing to maternal morbidity and near miss. As obstetricians and gynecologists, we have a great opportunity to assess and support women who experience violence because of the unique opportunity where we get to see them during the pregnancy, during the family planning visits, during their annual checkups, and multiple other times when they come to us. I strongly believe that by eliminating the violence against women, we are not only reaching the SDG goals, but also creates a just and equal society for our women. Until we make men and boys active partners, we can never end the violence against women. In an endeavor to sensitize our own fraternity, my initiative of DHEERA was started to eliminate violence against women. I completely support her vision and mission as President Foxy, and also especially support her campaign DHEERA, Stop Violence Against Women. It was in 2016 at the launch of DHEERA. We brought together the police, the obstetrician gynecologists, the National Commission for Women, the women and men on one single platform to wear orange and say no to violence against women. We organized the public forum and cyclothon to launch DHEERA. In 2017 at the Foxy Figo Congress, we partnered with men and organized the bikeathon and the flash mob. The high point of DHEERA was at the International Figo Congress at Rio, Brazil in 2018.
The Declaration on No to Violence Against Women was signed with FIGO and WHO. It was here global societies pledged their support to end this violence against women. The DHEERA campaign and march at the World Congress of FIGO in Rio in 2018 got wide international publicity. No change is possible unless the young minds adopt it and make it a part of their life. Young minds are open and creative. They accept change. Foxy has always worked with adolescents for their health and well-being. DHEERA this year adds a new page. I'm happy to share with you all that we are launching the DHEERA online school certification course across the length and breadth of our country in all the schools. Foxy for all always. DHEERA, stop violence against women. Let's start now. What is violence against women? Madam, keep it slideshow, madam. It's not in a slideshow. It's okay? Yes, madam. What is violence against women? How does DHEERA play into it? Our agenda. First, if any thing we plan, then we should have an agenda. What we are going to do. So first, what you should know, what is DHEERA and what is violence against women. And the second part of that the type of different types of violence against women. It is not only physical कि दो डंडे से ही मारे. That the violence may be psychological or in any other form. We will discuss this later on. And the third part will be the management. How to management the violence if there is violence. And the fourth one is peer pressure. First, you have to register. Then you have already given the pre-test, and after the program, you will again have to give post-test and then the feedback. Then certificate will be awarded to participant on post-attendance and submission of registration, pre-test, post-test, and feedback. Okay, let's start now. What is DHEERA? DHEERA means courageous and the power of being together. DHEERA together. अभी कोई भी एक सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें कोई अकेला इंडिविजुअल कुछ भी नहीं कर सकता. वी हैव टू बी टुगेदर. किसी भी चीज का इम्पैक्ट ज्यादा होता है. तो लेट्स स्टार्ट our movement against violence. Okay, next is not all men practice violence against women, but all women live with the threat of male violence every single day. It's not only in India, it's all over the earth. What is violence against women? First, you have to know this. It's a global human right violation. It has both short-term and long-term physical, economic, and psychological consequences. It prevents women their full and equal participation in society. The magnitude of impact on society is immeasurable. Conditions created by pandemic, including lockdown, reduced mobility, heightened isolation, stress, economic uncertainty, have led to an alarming spike in domestic violence. सभी ने घरों में भी देखा होगा, घर के आजू बाजू में भी सुना होगा, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड ऐसे भी काफी ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक था. सभी की नौकरियां छूट रही थी. तो ये सब चीजों ने वायलेंस में काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम और भी बढ़ाया था. क्या आप लोगों ने कभी किसी ने देखा है घर के आजू बाजू में, इवन घरों में, स्कूल में किसी भी फीमेल को इट सेज beaten, threatened or scolded? What do you think? Is it right? What is such behavior called?
Is there any word to describe it? It is called violence against women. Violence against women is the most shameful human right violation. It is most widespread. It knows no boundary of geography, culture, and wealth. As long as it is continued, there is no real progress towards equality, development, and peace. What exactly is vow? Forcing a woman to live in fear. The fear may be mental, it may be sexual, or the physical. The roots of vow. What are the causes of vow? These are toxic masculinity, the gender bias, sexism, patriarchal society, and gender stereotyping. We will know all in detail. What are the gender bias? All you know, the society prefer males. Girls are considered burden. उनको लगता है कि अगर बेटी होगी तो उसको पढ़ाना पड़ेगा, देन शादी करनी होगी, उसमें बहुत सारा डाउरी देना होगा. तो और ये सब होने के लिए दे ऑल्टरनेट कोई वो बीच का एक रास्ता चुनते हैं. दिस इज फेटिसाइड और इन्फेंटिसाइड. या तो फिर लड़कियों को होने ही नहीं देना है, उनको प्रेगनेंसी पीरियड में ही खत्म कर दो, या फिर जन्म लेने के बाद उनको मार दो. नेग्लेक्टिंग फीमेल हेल्थ इश्यूज, दीज आर ऑल हैपनिंग. What is patriarchy? Patriarchy is a system of society or the government in which men hold the power and women are largely excluded from it. Decision making rests with the male in the family. But with the changes of time, with the changes of society, all these things are changing, but still it has long way to go. What is gender stereotyping? Girls, they are considered should be faithful, emotional, they should be tolerant, sympathetic, and dependent. While the boys, so they consider they are competitive, logical, strategic, aggressive, and independent. And the next is sexism. What is a prejudice, stereotyping, discrimination, typically against women based on sex and gender. Now, what is toxic masculinity? They think बहुत सारी मूवी में आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा, मर्द को दर्द नहीं होता और इस टाइप की चीजें. तो that's it's toxic masculinity. I am a man, I'm strong, I don't cry, I can control everything, I'm the boss of my home or house or office, whatever, and I am the savior. Why doctors for women want to talk about violence against women? Because we gynecologists are the point of contact who can recognize changes in life. Most of the health problems of the women are rooted in violence. Serious health problems during pregnancy have roots in violence. बहुत सारे प्रेगनेंसी में होते हैं कि लोग मार खा के अगर उनको माँ उनके साथ कुछ अनवांटेड इवेंट हुआ तो इवन दे एबॉर्ट और फिर मिसकैरेज हो जाते हैं. और कभी कभी सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, यूट्राइन रप्चर और बेबी पेट में मतलब बेबी ऑफ हो सकता है पेट में. ये सब प्रॉब्लम होती है. Why DHEERA क्या है? This is the campaign. It is founded by Foxy president, as you heard her recently, Dr. Shanta Kumari, to stop violence against women. It is a campaign, all India initiative to sensitize, orient, train 36,000 plus obstetrician and gynecologists, more than 5 lakhs boys and girls of 9 to 12 grade, and more than 15,000 teachers. Already you have heard her. So courageous together, say no to violence against women. That is a hashtag DHEERA together. Let's tweet together. Building a voice. Our target is more than 1 lakh tweet. So add your courageous voice to the conversation.
what you have to do is to register, then you already has given pre-test, post-test, then feedback. Then certificate will be awarded to participants on course attendance and submission of registration, pre-test, post-test, and feedback. Now let's move to our next part. That is, what are the type of what is the type of violence? First is it is physical, and third is the combination. Among the physical violence, it's first is acid attack. You have heard a lot of things. Few year back, the actress Deepika Padukone has done the film Chhapak. तो उसके बारे में तो कुछ सभी लोगों ने सुना ही होगा कि और भी एसिड अटैक से रिलेटेड बहुत सारे इंसिडेंसेस होते रहते हैं सोसाइटी में. इट वाज 3 to 4 years बैक, इट वाज वेरी मच, न्यूज़पेपर में भी बहुत ज्यादा आ रहा था, बट राइट नाउ इट इज डिक्रीजिंग, बट इट हैज नॉट स्टॉप्ड. एंड द सेकंड इज ऑनर किलिंग. तुम लोगों को पता ही होगा कि ऑनर किलिंग हमेशा सोसाइटी में होती ही रहती है. थर्ड इज फेमिसाइड एंड फोर्थ वन इज सेक्सुअल वायलेंस. Then after that, there are psychological violence, that is financial manipulation, emotional abuse, bullying, stalking, eve teasing, and criminal intimidation. And third one is domestic violence. To start with the first part. What you have to do is to register, pre-test, post-test, and feedback. Okay, certificate will be awarded to participants on course attendance and submission of registration. What is physical violence? Physical violence क्या है? First one, it is told acid attack. This is the photo of Mrs. Lakshmi Agarwal, जिसको कि not 5 at the age of 15 acid attack हुआ था उनपे for rejecting the advances, romantic advance of a man who was 32 years old. उसके बाद जब कभी भी एसिड अटैक होता है, it is also from throwing a corrosive substance onto another. Sometimes it used as a form of also blackmail. Then the victim, if किसी पे भी एसिड अगर फेंका जाता है या तो फिर सबसे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है. द स्किन, राइट फ्रॉम द स्किन से लेके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें बर्न हो जाते हैं. आफ्टर दैट शी हैज टू गो थ्रू लॉट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अ प्रोलॉन्ग क्रोनिक treatment they have to take to improve, to get or better. The second one, what you can do if the attack is threatened or attempted. अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, somebody is following you constantly or harassing you, तो you should report to the trusted adult or police. किसी भी चीज का अगर प्रॉब्लम यू आर सस्पेक्टिंग कि ऐसा कोई फॉलो कर रहा है तुम्हारे को, तो यू शुड रिपोर्ट टू ट्रस्टेड एडल्ट और पुलिस. मेक श्योर टू स्टे अवे फ्रॉम द पर्सन थ्रेटनिंग. ऑलवेज ट्रेवल विथ अदर. कभी भी अकेले ट्रेवल करना, अकेले कहीं जा रहे हो तो फिर उसमें ज्यादा इजी होता है, असॉल्ट होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए बेटर टू ट्रेवल इन ग्रुप. अंडर सेक्शन 326B IPC, imprisonment not less than 5 years, but which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. If attacked or report attack to doctor, make sure to get treatment as soon as possible. कभी भी एसिड अटैक अगर या फिर इट डिपेंड कि वो इवन इट इज माइनर, छोटा भी अगर ये है तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी रिकवरी का चांस उतनी जल्दी रहेगा और उतनी अच्छी रिकवरी होती है. अगर बहुत ज्यादा देर तक एसिड अटैक होने के बाद विक्टिम जो गर्ल है और एनी पर्सन, अगर वो बहुत ज्यादा देर तक ट्रीटमेंट अगर नहीं मिल पाई तो टिश्यू स्टार्टेड गेट बर्निंग एंड स्कारिंग, बहुत उसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है. रिपोर्ट अटैक टू अडल्ट. टॉक टू पेरेंट्स, टीचर, पुलिस और एनीवन यू ट्रस्ट. कभी भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो यू शुड रिपोर्ट, जो कि तुम्हारी आइदर योर सिबलिंग और पेरेंट, टीचर और पुलिस. मेक श्योर यू स्टे अवे फ्रॉम द प्रिपरेटर ऑफ द क्राइम and report attack to authorities. There are section
326A IPC can be charged. It leads to imprisonment not less than 10 years, which may extend to imprisonment for the life. Fine charged to meet the medical expenses of the victim. But most सबसे जरूरी क्या है कि you first suspect कि ऐसा कुछ problem किसी के साथ है, और अगर किसी के साथ हो रहा है तो you should report it to your friend or teacher or your parents or even school, जिस पे भी आप विश्वास कर सकते हो. What is the next is honor killing. बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि कभी जैसे murder of an individual, either an outsider or a member of a family. It is usually why it is done. It is used to protect the reputation of the family. It is believed that the victim brought disrepute to the family. जैसे अगर बड़े मतलब पैसे वाले घर का लड़का या लड़की है, वो अगर किसी जिनके पास पैसे नहीं है अगर उससे कोई रिलेशन बनाना चाहता है, या फिर हायर कास्ट के लोग हैं वो अगर उसमें से कोई अगर लोअर कास्ट के साथ रिलेशन बनाना चाहता है, तो जो अपर कास्ट है या फिर जो पैसे वाले लोग हैं उनको वो अच्छा नहीं लगता है, और ये उनको लगता है कि अगर ये सब होगा तो उनके रेपुटेशन पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए दे ट्राई टू कि ये सब चीजें खत्म हो जाए. तो देन दे आइदर किल द बॉय और द गर्ल और बोथ. The next one is femicide. It is a gender-based crime. Arises when society prefer male over female. Can take the form of women-based hate crime, infanticide, killing of a newborn female child. बहुत पहले 15-20 साल पहले बहुत जगह होता था कि स्पेशली दिल्ली, पंजाब, यूपी, बच्चे अगर फैमिली में पता चल गया है कि हाँ जो बच्चा हुआ है इट इज फीमेल, तो फिर वो उसी टाइम उसको मारने की कोशिश करते थे कि किसी भी तरह वो फीमेल उनको नहीं चाहिए होती थी. और इवन प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड आने के बाद सेक्स डिटर्मिनेशन गेट्स इजी, तो उसमें भी पहले जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत सारी चीजें पॉजिटिव होती है लेकिन कुछ नेगेटिव चीजें भी होती है. तो अल्ट्रासाउंड में at 4 month 5 month it is easy to detect कि what is the sex of the baby. तो उसमें बहुत सारे फीमेल को लोगों ने अबॉर्ट करवाया. तो ये सब प्रॉब्लम्स के चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नाउ इट बिकम उन्होंने इसको बैन कर दिया कि देयर इज नो सेक्स डिटर्मिनेशन विल बी इन इंडिया. कोई भी सोनोग्राफी विल बी देयर, सोनोग्राफी होगी, पर सेक्स डिटर्मिनेशन आप नहीं कर सकते हो. अगर आप करते हो तो डॉक्टर, मशीन एंड द जो पार्टी करवा रही है वो सभी को दे विल बी लायबल टू गेट पनिश्ड. What is then sexual assault? This is the main thing you should know, all this, especially the girls. An act in which a man sexually touches a woman or compels her to get naked forcefully and without outward consent. It is punishable under 354 IPC with 1 to 5 year and a fine. It causes long-term mental trauma to victim. If you see sexual assault taking place, stop it. Please stop it, or can help even if your friend is the abuser. Nirbhaya Act 2013 and Section 375 IPC protect women against any type of rape. Section 354A IPC protects against sexual harassment and unwanted physical contact. POSCO Act 2012 protect minors from sexual abuse. You don't have to remember all these laws, but you should know कि ऐसा है. अगर तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो you can go to police and there are law who will help you. And if you are a survivor, do not shame yourself. You are not to blame. प्रॉब्लम क्या होती है, अगर किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी ने किसी लड़के ने किसी के साथ बदतमीजी की, किसी लड़के के साथ, या फिर किसी, तो वो जो पर्सन है जिसके ऊपर ये सब हो रहा वो सोचते कि मुझ में ही फॉल्ट है, या फिर डर के या घबरा के ये बातें अपने पेरेंट्स को या फिर किसी टीचर्स को नहीं बतलाती है. तो फर्स्ट यू शुड नो कि यू आर नॉट, यू डोंट शेम योरसेल्फ. Don't take a bath or wash yourself. What you have to do?
don't change your clothes. Write down what happened. You have to write down. Inform the police. Report in a timely manner so that there are evidence. बहुत सारी चीजें होती है जिसका एविडेंस, अगर आप पुलिस के पास जा रहे हो तो देयर शुड बी एविडेंस. अगर आपके साथ कुछ बदतमीजी हुई है या फिर इवन इफ रेप हुआ तो बहुत सारे एविडेंस वहां पर रहते हैं. तो यू शुड रिपोर्ट टाइमली. अगर आप बहुत दिन के बाद रिपोर्ट करो, 1-2 महीने के बाद, तो वहां पर कोई एविडेंस नहीं मिलने वाला है. इवन आपके कपड़े में भी कुछ एविडेंस है. अगर कोई आपको टच भी कर रहा है तो उसके हेयर्स या फिर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स जो भी है वो तो आपके बॉडी पार्ट्स में मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं. तो ये सारे एविडेंस होते हैं जो कि बाद में बहुत ज्यादा लीगल प्रोसेस में उनकी बहुत जरूरत होती है. तो यू शुड रिपोर्ट इमीडिएटली एंड डोंट बी अफ्रेड टू स्पीक अप एज यू आर नेवर एट फॉल्ट एंड अब्यूजर इज बाउंड टू रिपीट एक्शन. अगर आप डर जाओगे, नहीं किसी को रिपोर्ट कर रहे हो, तो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है उससे भी ज्यादा खराब हो, या फिर जो अब्यूजर है वो दूसरी लड़कियों को या फिर दूसरे बच्चों को अपना वो उसको अटैक कर सकते हैं. इसलिए ये सब चीजों से डरना नहीं है. अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम अगर हुआ है तो यू सी, यू बिलीव यू, इट्स नॉट योर फॉल्ट एंड यू आर नॉट अलोन. यू मस्ट गो एंड टेक हेल्प. What is psychological violence? There are also the not only कि तुम्हारे को कोई physically harm करे, there are psychological things also related to that violence. That is financial manipulation. It involves making or attempting to make a person financially dependent by maintaining total control over resources, withholding access to money, and or forbidding attendance at school or employment. मतलब वो फाइनेंशियली, अभी आपको अगर किसी कहीं भी बाहर जाना है या कुछ करना है तो यू नीड मनी. लेकिन अगर आपके पास कुछ भी मनी नहीं है और कोई एक्सेस नहीं है कि आपको पैसे मिल सके, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. आप हैंड बाउंड हो जाओगे और आपको घर में ही बैठना पड़ेगा या फिर एक कैप्टिव लाइफ रहेगी आपकी. उसमें एक केस स्टडी है. राज मॉनिटर हिज वाइफ अनन्या's बैंक अकाउंट and does not let her buy what she want. Raj's parents don't let Ananya to go to work. What can Ananya do? आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए उसको? Just share it in your thought in box. And the next one is emotional abuse. Undermining a person's sense of self-worth through constant criticism. Most common example are name calling, damaging a parent's relationship with children, not letting partners see friend or family. That is one case study is also there. Shreya is married to Ashok, whose colleague mock him for earning less. Feeling hurt over her pride, Ashok take out his frustration by drinking more often, frequent rage behavior, tantrums by breaking things, yelling and blackmailing Shreya of divorcing her. This constant fault-finding behavior of Ashok has a toll on the mental health of Shreya. What Shreya can do? क्या लगता है? जो भी इसमें श्रेया की कोई फॉल्ट तो है नहीं, बट शी शुड टॉक टू हर पार्टनर की जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है. अगर वो म्यूचुअल अगर अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो फिर यू कैन स्टार्ट द थिंग्स इन अ फ्रेश वे. और अगर इवन इफ हर हस्बैंड डज नॉट लिसन टू दिस थिंग, तो शी शुड रिपोर्ट टू हिज पेरेंट्स और हर पेरेंट्स. Okay, so this type of things are going, so they need some help, or you can say they can go to some counselor, or the condition, if the condition does not get control, then you can go to police also. The next is bullying. That is constant harassment, either verbal or physical. It can be a form of cyberbullying or ragging. The case, one case study is there. Neil, a senior, asked out Riya, his junior, who's rejected him. He feel embarrassed, and to bandage his pride, startups a rumor that Riya is a slut.
he started to harass her every day, calling her fat, ugly, or other such derogatory terms. He threw eggs at her house with his friend, pour water on her homework, and provoke all his friends into teasing her whenever they see her. You see this taking place. What do? Do you help Ria? Who do you contact? What do you think? First, if all this is happening, Ria should inform to their parents and to her the school authority. अगर वो स्कूल में सब प्रॉब्लम हो रही है कि these things are going on, तो वो स्कूल अथॉरिटी को ही इन्फॉर्म करेगी. देन द स्कूल और देयर पेरेंट्स कैन टेक द राइट स्टेप कि आगे क्या करना है. ठीक है. और अगर कोई भी बात अगर दोनों स्कूल अथॉरिटी या फिर पेरेंट्स अगर नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो देन लॉ इज देयर. यू कैन गो टू पुलिस फॉर हेल्प. And the cyberbullying. It is online form of bullying and abuse. When technology is used to write aggressive, embarrassing, or hateful messages about peers in order to intimidate, harass, shame, and control. It includes threatening, abusive text messages, creation of embarrassing images and videos, sharing them, creating fake accounts, stealing online identities, sharing sexual messages. Did you know female are 2 times more likely to be victim of cyberbullying? The next is, what can you do if you are being cyberbullied? Get in contact with the customer service representative if you're confused. Check platform of anti-bullying policy. Blocking and reporting. You can block the person or report it to the authorities. And you can also file a criminal complaint. But make sure to collect the screenshot. If someone is sending some WhatsApp message or any form of message to you, keep a screenshot so that it will act as an evidence. अगर कोई भी तुम्हारे को कुछ मैसेज भेज रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है या कुछ फोटो भेज रहा है, तो बिफोर डिलीटिंग इट जस्ट कीप स्क्रीनशॉट की इस आदमी ने तुम्हें ऐसा मैसेज भेजा है. क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम बढ़ती है, देन यू कैन शो इट टू द अथॉरिटी कि हाँ ये पहले से ये सब प्रॉब्लम हो रही थी. You can approach the cyber investigation cell. For this, you should keep all the screenshot or all the messages saved. You can report to a cyber cell from any city. If unable to report to cyber cell, lodge FIR or reach women oriented C team. Lots of female oriented NGOs are there in society who can also help you, or you can there are a lot of women related crimes in police department. There are a lot of things in the police department which you can contact. Shocking. When an individual follows a woman and repeatedly try to contact her without consent, it can occur digitally also. There are also a law is there to protect from this type of harassment. It is section 354D IPC imprison the culprit for 1 to 3 years, and culprit can be liable to fine. The case study is there. Sanjay, 17, start to follow around Meera. She is also 17-year-old. Everywhere she goes, learning her everyday routine, taking her pictures, joining her tuition, etc. His friends start to encourage him, comparing him to popular role that actors have played in Bollywood movie. Meera start to feel uncomfortable. What can she do next? This type of thing, if happen to anyone or you, so you must report it to your parents or your teachers, your elders, what you are going through. They must know what you are going through so that they can take an appropriate steps. And voyeurism.
the watching or and taking pictures of women without consent or without the knowledge of the women. There are section 354C ICP, imprison the culprit for 1 to 3 years on first conviction. After more conviction, abuser can be imprisoned for 3 to 4 years. And eve teasing, obscene action like unwanted remarks, sexual advances by a man to insult a woman in public place is eve teasing. Section 294 IPC punishes men who speak in an obscene way for a maximum of 3 months. Section 509 IPC punishes men who act or uses an object to insult a woman with a term up to 3 years. So all these things, if you are, if there are, and you are facing, so you should take steps how to conquer it. What is criminal intimidation? When someone is threatening to cause death, hurt grievously, अगर मारने की धमकी देता है, or to destroy your property, then section 503 IPC can cause imprisonment up to 2 years or a fine or both. What is sexual harassment? Unwelcome sexual advances, request for sexual favors, sexual remarks, showing pornography without consent, all constitute sexual harassment. Can be reported under section 354A IPC, which is punishable with up to 3 years of imprisonment. What is case? There is a case study also. You can, for example, these are all examples of these points. Unseasonal rain has caused a farmer to lose a considerable amount of crop that he was unable to sell. To make his end meet, he take a loan from the village loan shark Raghu. After a few months, unable to pay his loan back, his daughter offered to help settle her father's debt by working for the loan shark. Taking advantage of their displacement, Raghu sexually harassed the girl. If you saw this happening, what would you do? First, you should go and talk to Raghu. This should not be done. If still Raghu is doing this thing, then you can go to village, or the village sarpanch are there, or the village head. You can go to that. If still the problem is persisting, then the police and the law is the last resort. But if you should not keep it mum, agar wo chupchap rahegi, to then this worst thing is going to happen to her. So you should report it to someone in your village or in family or in police, whatever you feel it is. The person will take care of it. There's a combination of this is domestic violence. It does not just have to be between a married couple. Any pattern of behavior used to gain or maintain power or control over partners. Main issue is that the most victims of domestic violence do not know that they are being abused. It is hard to believe a trusted partner could be manipulative. Can also be harassment from in-law. पहले जब एजुकेशन का लेवल स्टेटस बहुत, स्पेशली फीमेल एजुकेशन का स्टेटस बहुत अच्छा नहीं था, लड़कियां 3rd, 4th या इवन प्राइमरी भी पास नहीं करती थी, तो उनको तो ये समझ ही में नहीं आता था कि जो हस्बैंड से या इन लॉ से उनको अगर मार पड़ रही है या फिर डांट सुननी पड़ रही है तो इट इज इलीगल. उनको लगता था कि ये उनकी डेली लाइफ का, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेली रूटीन. तो विद द एजुकेशन एटलीस्ट यू शुड नो कि ये दिस इज नॉट द आइडियल फैमिली और फैमिली इन्वायरमेंट. ये सब नहीं होना चाहिए. और एक बार यू हैव टू टेक सम स्टेप, अदरवाइज यही सब फैमिली में चलता रहेगा. your mother has faced, you are facing, then agar your daughter or is going to face these things. So this must be stopped.
But that example of power control, it can be economic, पैसे नहीं देना, और emotionally abuse करना कि ये नहीं करना चाहिए, लड़कियां ऐसे नहीं करती है, या ऐसे करने से घर की इज्जत खराब होगी, या फिर उससे आइसोलेट करना उस पर्सन को कि बात नहीं करना, मिनिमाइजिंग, denying or blaming, using male privilege. All these are the example of these are next is cycle of abuse. तो अगर एक abuse you have to break someone the cycle. अगर नहीं, कहीं तुम अगर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो तो the cycle is going on. तो you have at least you must have the courage to break it. अगर जब तक उसको चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो एक ग्रुप या कोई सोसाइटी हमेशा तुम्हारे को हेल्प करने आए किसी एट एनी पॉइंट ऑफ द साइकिल, यू मस्ट गेट सफिशिएंट energy or the positivity to, so that you can counter all this negative that is happening to you or your in the family or whatever is there. The domestic, there are also Domestic Violence Act 2005. This, it covers physical, sexual, verbal and economic abuse. It grants immediate protection, punishes the abuser for imprisonment up to 3 years. Because domestic violence काफी ज़्यादा जब बढ़ने लगता है तो फिर you should go to the police. The next, ending war, it is not a single day. All the things will normalize or will be in your favor, but you have to take one step at a time so that we can minimize it and ultimately try to end it. So you have to register pre-test, post-test and feedback. Certificate will be awarded to participants on course attendance and submission of registration, pre-test and post-test. Courageous together, say no to violence against women. That is hashtag DHEERA together. Let's tweet together, building a voice. Our target is more than 1 lakh tweets, so add your courageous voice to the conservation. Now the my colleague Dipti will join you for our next part. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Thank Jain, Jain, ma'am. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Ma'am, your mic is muted. Hello, hi, Jai Hind. Good afternoon, everyone. Jain, ma'am. Jain, ma'am. Good afternoon. Jain, ma'am. Good afternoon, ma'am. Rekha ma'am, can somebody upload my video because my laptop isn't working, so I am not able to upload the video of presentation. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yeah, Yes, ma'am. ma'am. Is there someone from backend team? Yes, ma'am. Yes, madam. Wait. I think ma'am would upload, or let me check. Just a minute. हाँ, actually मेरा laptop में कुछ issue आ गया तो वो हो नहीं पा रहा है मेरे Foxy official is there. I will call. Okay. हाँ, okay. हेलो, यस, हाँ, तो ओके, मैनेजमेंट वाला रेखा मैम के पास है क्या? एक्चुअली ना मेरे या तो मैं मोबाइल से ही फिर लॉग इन करूँ क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपलोड
Dipti, they are sharing. Wait. Click on the share button, you will get the option. Dipti, they are sharing their screen. Okay. Yeah. The screen is visible, ma'am. Yes, now it is visible. Yeah. Thank you. Welcome, ma'am. Okay. Yeah. So, good afternoon, students. I'm myself, Dr. Dipti Agarwal. I'm a consultant obstetrician and gynecologist practicing at Silvassa. I'm sure previous 2 lectures में आपको ये तो पता चल गया होगा कि what do you mean by WOW? WOW is violence against women and उसकी various types, उसका classification मैम ने बहुत डिटेल्स में और इन डेप्थ जाके आप बच्चों को पढ़ाया है. So I hope you are clear about the topic which we are going to discuss, which is management strategies for WOW. Am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So WOW is, it is an initiative by our Foxy president, Dr. Shanta Kumari and team DHEERA. ये इस साल का मोटो है हमारा कि हमारी इंडिया में और यूनिसेफ के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड हम ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि जो लेडीज, जो विमेन वायलेंस के पीड़ित है, जो घर में हो गया, सोशली हो गया, ऑफिस में हो गया, तो दे शुड स्पीक अप, दे शुड स्टैंड फॉर देयर सेल्फ एंड गेट देयर प्रॉब्लम एक्नॉलेज एंड एट द सेम टाइम मैनेज. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या नेक्स्ट स्लाइड. सो प्रीवियस स्पीकर रेखा मैम ने आपको बताया होगा कि आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा यूनिसेफ और फॉक्सी की तरफ से, बट इसके लिए रजिस्ट्रेशन, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट और फीडबैक, ये चारों ही चीजें जरूरी है. रजिस्ट्रेशन और प्री टेस्ट आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो. पोस्ट टेस्ट और फीडबैक आफ्टर द होल प्रेजेंटेशन, लाइक आफ्टर 6 मॉड्यूल्स, वो आपको सबमिट करनी होगी एंड देन ओनली यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन. ओके, नेक्स्ट स्लाइड. या सो अभी हमको ये पता करना है कि वाव के पीछे माइंडसेट क्या होता है, यानी जो परपेट्रेटर है कि जो आपके ऊपर वायलेंस कर रहा है किसी भी लेडी पे, तो वो क्या माइंडसेट से गुजरता है कि वाव को वायलेंस होता है लेडी घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे सोशली हो. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ड्रग, अल्कोहल अब्यूजेस, किसी भी प्रकार का अगर वो अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, जैसे कि कॉमनली आजकल स्टूडेंट्स लोगों में या थोड़ा यंग क्राउड में ड्रग्स या अल्कोहल या स्मोकिंग, इनके कोई शिकार है, या उनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. जैसे इन जनरल बिकॉज हमारा पैट्रियार्कल सोसाइटी रहा है इतने सालों से, तो यूजुअली घर में भी ऐसे होता है कि भाई को या लड़के को या बेटे को बहन के या वाइफ के ऊपर प्रेसिडेंस मिलता है. तो इस चलते ये सारा जो वो बचपन से देखते आते हैं कि हमेशा बहन से पहले भाई को मान्यता मिलेगी, बेटी से पहले बेटे को उसकी जरूरतें पूरी की जाएगी. तो इस वजह से जो फ्रॉम रूट, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड, उनका जो मेंटालिटी डेवलपमेंट होता है, माइंडसेट डेवलपमेंट होता है कि वो एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है. So main, not all of course, but most of the time, by and large, कि उनको एक superiority आता है, कि ईगो इशू हो जाता है कि मैं फर्स्ट हूँ, कोई भी चीज में मुझे पहले प्रेसिडेंस मिलना चाहिए, या मेरा इम्पोर्टेंस लेडी से या लड़की से ज्यादा होना चाहिए. कभी कभी एंगर इश्यूज ये चीजें और ज्यादा एग्रेवेट करते हैं कि किसी को अपना आपा जल्दी खोना हो जाता है, या वो अपना एंगर अपने कंट्रोल में नहीं रख पाता है. कभी कभी ट्रबल चाइल्डहुड का केस होता है, जैसे कि अगर बचपन में उस पर्सन के साथ बैड इंसिडेंसेस हुए हो, या घर में उन्होंने देखा हो कि पिताजी अक्सर माताजी को मारते थे या कोसते थे या डांटते थे, या किसी भी तरह का वायलेंस होता था लेडीज का घर में, तो इस चीजों का संगोपन उनकी मेंटालिटी में होता जाता है, और धीरे धीरे दे स्टार्ट फीलिंग दैट ओके, ये सारा करना नॉर्मल है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम अगर ये कर रहे हैं तो वी आर जस्टिफाइड बिकॉज हमने बचपन से ये देखा है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इज जेंडर बायस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि हमारी सोसाइटी कई सालों से पेट्रियार्कल यानी कि पुरुष प्रधान सोसाइटी रही है,
तो उस वजह से यूजुअली जेंट्स में या लड़कों में यह आ जाता है कि लड़के जो भी करे वो सब सही है या वो माफ हो सकता है, बट लड़कियों ने किसी भी प्रकार का कहीं भी गलती किया तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या सो जैसे हमने देखा कि इट इज अ रूट कॉज एंड इफेक्ट बोथ, तो ये विशियस सर्कल है, जैसे कि आगे के प्रेजेंटेशन में भी हमने देखा। तो ये माइंडसेट हमको कहीं ना कहीं तोड़ना है। सो वाओ माइंडसेट इज नर्चर्ड सिंस चाइल्डहुड बेस्ड ऑन द वे अ चाइल्ड इज ब्रॉट अप। नेक्स्ट। So what do you do if you know someone being harassed? So don't be afraid. आपको घबराना नहीं है. Listen to the victim story and believe the story. जो भी लड़की या जो पीड़िता है वो आपको अगर अपनी स्टोरी बताना चाहती है तो आपने पूरे दिल से उसको सुनना चाहिए और उसको बिलीव करना चाहिए. Reassure them to stay brave. Do not blame the victim. Keep an eye on the situation to make sure it is not getting too dangerous. Ask about their immediate plan. Report to a higher authority such as teacher, parent या police. For example, आपकी क्लास में कोई लड़का या इन जनरल कोई स्कूल में कोई लड़की को कोई लड़का परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग हो रहा है या उसको गलत तरीके से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सारी चीजों पे लड़की की बात को आप समझें, उसको बिलीव करें, उसको ये ना कहे कि तुम ऐसे करती हो इसलिए वो ऐसे कर रहा है. यू शुड ऑलवेज सपोर्ट हर एंड आस्क हर टू स्टे ब्रेव. और अगर ये ज्यादा ही हद से बढ़ रहा हो तो आपने इमीडिएटली हायर अथॉरिटीज जैसे टीचर हो गया या आपके पेरेंट या पुलिस या कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति के जो यू कन्फाइड टू देम, जो एक सपोर्टिंग है, जो आपको समझता है, उसको आपने ये चीजों के बारे में इत्तला करनी चाहिए. Respect their decision, have resources to keep conversation going and be careful that any actions taken do not harm you or victim. So उसकी मदद करते टाइम आपको अपनी भी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए. Next please. What to do if you are being abused? Recognize the toxic behavior of the cycle of abuse. Protect yourself by living from the vicinity of the abuser. Avoid escalating situations. Report the incidents. Keep evidence of the abuse by recording or photographing. Plan a safety kit in case you have to leave your home in a hurry. Let someone you trust know of abuse, such as friend, neighbor, your doctor or police officer. तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि अगर ऐसा कुछ अब्यूज हो रहा है तो सबसे पहली बात तो ये हमको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट राइट बिहेवियर और दिस इज अ काइंड ऑफ अब्यूजिव बिहेवियर. सो आपने वो सारी चीजों को रिपोर्ट करिए, उसका एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ, अब आजकल मोबाइल फोन, एंड्रॉइड फोन सभी के पास होते हैं, तो या आप फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं या आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको आप अपने फ्रेंड से, अपने घर के किसी सदस्य से जो जिससे आप कंफर्टेबल हो, आपके डॉक्टर या पुलिस ऑफिशियल, इनसे आप जरूर शेयर करिए. नेक्स्ट. Speak out. Don't let the abuser rob of your voice. Claiming your voice back is difficult, and yes, believe your words have power. Speaking up is the first step to end wow. Take a stand because your abuser is afraid of your voice. So, in short, जैसे कि ये साइकिल चालू होती है एक बहुत छोटे इंसिडेंट से. फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा है. अगर वो पहली बार में कुछ नहीं बोलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़के को लगेगा कि इफ ही परसीव्स तो मे बी लड़की मान जाएगी या ही विल बी एबल टू अप्रोच हर. बट अगर पहली बार में ही उसने ना बोला या उसने आवाज उठाई, अपने फ्रेंड की या अपने पेरेंट्स की या अपने टीचर की मदद मांगी, तो लड़का अलर्ट हो जाएगा, अब्यूजर अलर्ट हो जाएगा और वो आगे से नहीं करेगा ये सारी चीजें. सो ही विल बी अफ्रेड ऑफ योर वॉइस. सो स्पीक आउट फॉर योरसेल्फ. नेक्स्ट. डोंट लेट डाउन अनदर जनरेशन ऑफ विक्टिम. जैसे कि रेखा मैम ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि पहले हमारे दादी नानी या उनके भी पहले जमाने से जो
सालों से जो प्रथा चली आ रही है कि लड़की को या बहू को या माँ को घर में उसको कोई ज्यादा हक नहीं होता था, उसका कोई ओपिनियन नहीं होता था, उससे कोई पूछता नहीं था, उसको खाली डिसीजन सौंपे जाते थे कि आपको ऐसे करना है, या किसी भी प्रकार का फिजिकल वायलेंस भी हो गया, या उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी नहीं होता था कि खुद के लिए एक चीज भी ले पाए. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायलेंस ओनली. या अपना कोई लाइफ से रिलेटेड डिसीजन वो नहीं ले पाती थी. तो ये सारी जो पिछले जनरेशन में हो गई है, ये चीजें अब हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों की जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड हो. There should be good things which should be carried forward to the future generation, and letting go wow is one of the good things which we can do for your generation. So that's why we, and as a team DHEERA and Foxy has taken the initiative कि ये पहले हम आप लोग को अवेयर करवाएंगे कि ये चीज हाँ सोसाइटी में कॉमन है. कई सारी ऑलमोस्ट 50-70% लेडीज इसका शिकार होती है, और अगर उनको जब तक इसकी अवेयरनेस नहीं होगी, वो अपने आप से आवाज नहीं उठाएगी, तो ना ही उनको मदद मिल पाएगी और ना ही अब्यूजर के बिहेवियर में हम कोई चेंज कर पाएंगे. राइट? So give the victim a platform to speak, and DHEERA is that platform, and you should be tweeting I support DHEERA, I support no against violence against women. Okay, so believe the victim, don't blame the victim, stand up for justice, and don't let people forget that once someone commits abuse, they are prone to doing it again. For example, अगर उस लड़के को, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर उसको तभी नहीं उस लड़की ने रोका या तभी उसकी कंप्लेंट टीचर से या सुपीरियर अथॉरिटी से नहीं की, तो क्या होगा? अगली बार वो किसी और लड़की को छेड़ेगा, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा. तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी बुरे हादसे का शिकार हो सकती है. अगर पहली ही बार में उस लड़की खुद के लिए भी, बट आने वाली जो अब्यूज होने वाली लड़कियों के लिए आवाज उठाएगी, तो वो लड़का वही डर जाएगा और वो आगे और कुछ बुरा बर्ताव करने की नहीं सोचेगा. नेक्स्ट, safety using technology. Download, there are certain apps, like I'm sure आप लोग अभी Android mobile phones almost सारे बच्चे की requirement हो गई है because of this COVID ongoing and having online sessions. So there are certain apps which are made for safety. Okay, so they are like Smart Seher, Women Safety Shield Protection app, With You app, Scream Alarm, Suspect Registry, Be Safe, Abhaya, etc. So these apps you can always download at least one of them and keep them active, so that you find yourself in a situation, at least you switch on the trigger button, and your near and dear ones or your friends or your family member will come to know that you are in some danger or you need some help. Okay, so you should, and that's why these apps also will give your location to your trust friends. Okay, so take pictures of taxi driver or license plate. For example, आप एक जगह से दूसरी जगह travel कर रही है, unknown place है या थोड़ा रात का time है, so always take a picture of the taxi driver, so he is alerted कि मेरा photo अभी आ गया है, so I cannot do any bad thing to this girl or to this lady. Okay, always taxi number आप अपने friend से taxi में बैठते थे या अपने family से share कीजिए कि so and so टैक्सी में मैं बैठी हूँ, और इन केस ऑफ emergency activate location and app both. So this is going to help you in much more simpler way कि आपको ज्यादा कुछ चिल्लाना नहीं है या पर्सन आगे ही अलर्ट हो जाएगा कि वो कुछ अब्यूज करने की सोचे ही ना. ये सारी चीजें आपके पास हो तो. नेक्स्ट प्लीज. So this is a distress signal. So you have to So जो पिक्चर में दिखाया गया है इसको हम डिस्ट्रेस साइन बोलते हैं. कैमरा का सिर्फ 4 फिंगर और एक थंब जो इनसाइड जाएगा, उसको आप जब ऐसे ऐसे कर रहे हो, जस्ट एज shown in the picture, it is a distress sign. So we come to know, or people around you come to know that you are in some danger or you are not safe, and they will try to help you. Okay, next.
If you see the distress sign, what you should do? If you see the signal, check in with the person's safety to find out what they need and what you can do. If you find a threat of danger, call the local police and helplines mentioned. Next slide please. So these are certain helpline number which you should write down on your paper. सबसे इम्पोर्टेंट है एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर विच इज 1098, ये वाला आप सारे बच्चे लिख लीजिए. दूसरा है ऑल इंडिया विमेन हेल्पलाइन फॉर वुमेन इन डिस्ट्रेस, so that is 1091, एंड वुमेन डोमेस्टिक अब्यूज हेल्पलाइन इज 181. ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों में से अगर एक जो आपको याद रखना हो वो है 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हेल्पलाइन नंबर. तो ये नंबर कभी भी आप अपने मोबाइल से डायल करेंगे तो इमीडिएटली यू कैन कॉल फॉर हेल्प. बाकी सारे जो है आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के पुलिस स्टेशन का या उस एरिया में जो भी एनजीओ होंगे या वेलफेयर सोसाइटीज होंगे उनके नंबर भी ऑफ कोर्स आप अपनी मोबाइल की डायरेक्टरी में स्टोर करके रख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या सो ये सारी हेल्पलाइन आपको आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सो दैट दे आर स्टोर्ड इन योर डायरेक्टरी. नेक्स्ट प्लीज. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है विच इज 1098, दैट यू शुड रिमेंबर बाय हार्ट. ओके, am I audible, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. If you have any doubts or you need any clarifications, you can always write it on a paper and at the end of the session you can ask for your queries. Am I clear? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we further move with the reporting process. So how do you go about it? See, report the incident to a local police or a special police unit. Record the statement for police within 24 hours. Don't delay. अभी एक 0 FIR करके एक चीज होती है जिसमें भले ही हादसा कोई दूसरी जगह हुआ हो लेकिन लेडी कोई भी अपने आसपास के पुलिस स्टेशन से वो FIR दर्ज करवा सकती है. पहले ऐसा होता था कि जहां वो हादसा हुआ हो या वो मिसहैप हुआ हो वहीं के पुलिस थाना में आपको जाके कंप्लेंट लिखवानी होती थी, बट अब ऐसा रूल नहीं है. भारत के संविधान में ये लागू हो गया है कि 0 FIR हो सकता है. देन गो टू हॉस्पिटल और शेल्टर होम फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अ फीमेल डॉक्टर. रिकॉर्ड स्टेटमेंट फॉर मैजिस्ट्रेट. स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट ट्रायल विद इन 1 ईयर. सो अगर ऐसा कोई हादसा किसी लड़की के साथ होता है तो ये सारी स्टेप्स फॉलो होनी चाहिए 24 आवर्स के बीच में. विद इन 24 आवर्स आपने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाए, हॉस्पिटल में जैसे हो जो कपड़े में हो उसी तरह से उसी हाल में जाके चेकअप फीमेल डॉक्टर से करवाए, स्टेटमेंट अपना मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करे. और ये सारी बिकॉज अभी फास्ट ट्रैक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेप केसेस और वायलेंस अगेंस्ट लेडीज के लिए जो स्पेशल कोर्ट अनाउंस किए हैं उसमें ये फास्ट ट्रैक हो जाते हैं. इसका मतलब कि विद इन 1 ईयर आपको इसके ट्रायल कंप्लीट करने होते हैं. इट्स नॉट लाइक कि सालों साल आप अदालत के चक्कर काट रहे हैं और फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है या जस्टिस नहीं मिल रहा है. ओके, नेक्स्ट. So let's keep them that way. Why? Because girls, अब मैं आपको एक मेडिकल फैक्ट बताती हूँ कि एक लड़का जब और एक लड़की जब अपनी माँ की कोख में होते हैं तो as compared to male fetus, female fetus are very strong. Like अगर दोनों को सेम कंडीशन में रखा कि खाना कम है, ब्लड कम है उनको वूम में, तो गर्ल चाइल्ड के सर्वाइवल के चांसेस कई ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल चाइल्ड. तो प्रकृति ने जब हमको ये वरदान प्रदान किया है तो क्यों ना हम जब वो जन्म के बाद वो लड़की का क्यों हम उसको डिटोरिएट करें या उसको डिग्रेड करें, उनको उसी तरह हम स्ट्रांग रखें. और ये आप में, हम में, सोसाइटी में जितने मेल है, फीमेल है और जितने भी लोग हैं सबको मिलके ये चीज को आगे बढ़ाना होगा. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द
end of our third session, which was management strategies of WOW. So again, I will just like to remind you that to get a certificate, you need to register, give a pre-test, post-test, and feedback. Then only you will be able to receive the certificate for your attendance. Next. अगेन जो हम बोल रहे थे कि स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, तो धीरा टुगेदर ये ट्वीट करिए. अगर आप ये ट्वीट कर रहे हैं तो हम हमारी आवाज बढ़ा रहे हैं, हम हमारी आवाज को मजबूत कर रहे हैं, सो दैट यू नो the ladies in the society, entire world is getting aware about violence against women and उसको जो मैनेज करने की स्ट्रेटेजीज के लिए. So tweet धीरा together. So now we will go for our fourth module, which would be a role of active bystander. Can I have presentation, please? Next, please. So again, just to remind you, registration, pre-test, post-test, and feedback are compulsory for the certificate to get. So who is a bystander? An individual who observe an act of violence, discrimination, or other problematic behavior, but are not its direct perpetrator. So जो हम यूजुअली देखते हैं ना मूवीज में कि कहीं कोई एक हादसा हो रहा होता है और पूरी भीड़ जमा होती है, तो वो जो भीड़ जमा होने वाले जो लोग हैं वो सारे बाइस्टैंडर है. बट बाइस्टैंडर doesn't mean that they are active. There are two kinds of bystander, which are active and passive. Next, please. So what do you mean by active bystander? One who take action and try to stop it. जैसे कि भीड़ में से कुछ लोग होंगे जो आगे आएंगे, जो अब्यूजर को बोलेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, मत करिए, या विक्टिम को हेल्प करेंगे, उसकी मदद करेंगे. So वो एक्टिव बाइस्टैंडर हो गए. और जो पैसिव है, who will not act or intervene. So but there is audience inhibition हो गया, fear of retaliation हो गया, या social influence के वजह से. जैसे फॉर एग्जाम्पल आमतौर पे हिंदी मूवीज में हम देखते हैं कि किसी एक बड़े गुंडे के लड़के आते हैं और हीरोइन पे हमला करते हैं. तो क्या होता है कि बिकॉज लोगों को पता होता है कि वो फलाना फलाना गुंडे के आदमी है, तो वो नहीं चाहते कि हमारे घर पे या हम पे कोई विपदा आए, इसलिए दे विल नॉट स्पीक अप, जबकि उनको पता होगा कि ये जो हो रहा है वो गलत है. फाइन. तो दे आर काइंड ऑफ पैसिव बायस्टैंडर. नेक्स्ट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो what are the duties of bystander? The weapons of active bystander are 5 Ds. Now what are the 5 Ds? Next please. First is distract. It's a subtle and safe way to intervene. The aim is to interrupt and derail the incident. Pretend to be lost. Ask for time or address of a place. Pretend you know the person being harassed. Talk something irrelevant and take attention of the harasser. So in general आप जाइए और ऐसा दिखाइए कि you don't know and just ask them time, और वो इंसिडेंट से विक्टिम को बचाने के लिए आप कुछ उनको पूछ लीजिए कि मुझे रास्ता नहीं पता है, ऐसा. तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अब्यूजर. ओके. सेकेंड. नेक्स्ट प्लीज. डिले. Delaying can reduce the severity. Ask the victim if she is okay. Offer to accompany her to her destination, or just be with her for a while. Okay. So that's how you can delay the crime or the abuse going on. Third. Next please. Delegate. Delegation is when you ask for assistance, for a resource, or for help from third party. If near a shop, ask the shopkeeper. If on a bus, ask a co-passenger, bus conductor to intervene. If you are in a school, contact teacher for help. So delegation में क्या करेंगे, आपके आसपास जो भी कोई इंसान है उसकी आप मदद मांगेंगे to stop that crime which is going on as a bystander. Okay. Next please.
document. This is one of the important aspects of a important part of a bystander, and that too active bystander. Like जो भी crime हो रहा है या जो भी abuse हो रहा है, आप उसको document करें in the form of pictures or videos or both, okay? या आप वो लिख के बता सकते हैं अगले person को. So this will first, you have to first assess the situation. If anyone helping the person being harassed, if not, use one of the other D's, like जो हमने आगे distract और delegation के पढ़े हैं. If someone else is already helping out, assess your own safety. Only if you are safe, then only go ahead and start recording. Always ask the person who has harassed what they want to do with the recording. So जैसे कि मैंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट तो कर लिए, लेकिन ऐसे ही सोशल मीडिया पे मत उसको अपलोड करिए. You should always ask the victim if she wants to share it with somebody, if she wants to upload it to the सोशल मीडिया. बिना उनकी सम्मति के या कंसेंट के आप ये वीडियो या ये पिक्चर्स आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर सकते. So never post it on social media. Using an image or a video of a person being victimized without the person's consent may make the person feel even more depressed and can lead to a level of visibility that person may not want. Publicizing another person's traumatic experiences is no way to an effective bystander. Okay, next please. Next slide. And what is fifth part of that 5D? It is direct. Directly respond to harassment by naming what is happening or confronting the harasser. This can be risky. The harasser may redirect their abuse towards you. It may escalate the situation. Be clear, confident but cautious. तो जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हमने जाना है कि आप डॉक्यूमेंट तो कर लिए हैं, लेकिन हमेशा अपनी सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है. ऐसे नहीं है कि जैसे हम फ्लाइट में भी जाते हैं तो वो अक्सर बोलते हैं ना कि दूसरे को ऑक्सीजन देने के पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क हमेशा लगा के चेक कर लीजिए. उसी तरह से जब हम दूसरी विक्टिम को मदद करने जा रहे हैं तो हमेशा अपनी सेफ्टी का पहले ध्यान रखिए एंड असेस कि आप जब सेफ हो तो ही वीडियो रिकॉर्ड करें या फोटोग्राफ ले. और हमेशा जब डायरेक्ट भी कर रहे हो या हरासर को आप डायरेक्टली कॉन्फ्रंट कर रहे हो तो हमेशा खुद की भी सेफ्टी देखें. अदरवाइज क्या होगा कि वो और गुस्सा हो जाएगा और उसकी जगह वो आपको ही पीटने लगेगा या आपको ही हरास करने लगेगा. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मायने रखती है. आपकी सेफ्टी उतनी ही जरूरी है जितनी की विक्टिम की जरूरी है. नेक्स्ट प्लीज. सो गोल्डन रूल. व्हाट इज गोल्डन रूल? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि 1098 विच इज अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर और डायल 100 विच इज अ पुलिस नंबर. सो ओनली इंटरवेन इफ इट इज सेफ फॉर यू टू डू सो. If not safe, call the police or child helpline number as mentioned. तो ये दो नंबर आप स्टोर करके रख लीजिए. नेक्स्ट प्लीज. More ways to get involved. So what we can do to have this incidents reduce or reduce the severity. Organize actions like राइटिंग स्टोरीज, पोस्टर्स एंड नुक्कड़ नाटक. सो हम इससे क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं एक सोसाइटी में कि ये सारे हादसे नहीं होने चाहिए. ये हो रहे हैं, वो पर्सन को भी कई बार पता नहीं होता है तो वो विक्टिम को भी रियलाइज होगा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस के हस्बैंड रोज आता है, शराब पी के मारता है, गाली गलौज करता है या आपको वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है. कई बार लेडी को पता ही नहीं होता है कि ये काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है. तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे बाय राइटिंग स्टोरीज, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक. इफ यू नो सम ऑर्गेनाइजेशन हु इज वर्किंग फॉर इट, यू कैन डोनेट योर टाइम एंड आइडियाज फॉर इट. आप जो यंगस्टर्स है, जो नई पीढ़ी है, so I'm sure you people are full of enthusiasm and varied ideas. So you can always donate your precious time. आधा घंटा चले जाए, 1 घंटा चले जाए या उनको किसी आइडिया में हेल्प कर दे. तो ये सब हम हमारी सोसाइटी के लिए जरूर कर सकते हैं. Appreciate someone practicing bystander intervention.
तो उस भीड़ में जो एक इंसान, वो लड़की जो हीरोइन थी, जो मैंने आपको एक प्लॉट दिया था, तो उसमें से एक कोई इंसान होता है जो आगे आता है और वो उसकी मदद करना चाहता है, तो यू शुड ऑलवेज अप्रिशिएट एंड अपलॉड फॉर दैट पर्सन। ओके, तो इससे क्या होगा कि उसका तो मनोबल पक्का होगा, लेकिन भीड़ में खड़े रहने वाले बाकी लोगों को भी रियलाइज होगा कि हाँ, ये चीज कभी उनके भी घर के बहन बेटियों पे या उन पे खुद पे भी हो सकती है, तो दे हेल्प। नेक्स्ट प्लीज। रॉन्ग थिंग्स टू स्टे। अभी क्या होता है कि कई बार बजाय जो अब्यूजर है उसको बोलने की बजाय लोग क्या करते हैं कि लड़की को बोलते हैं कि आप इतने छोटे कपड़े पहन के क्यों गई, आप नाइट में क्यों गई, आप इतने बजे के बाद बाहर क्यों निकली, आपने स्कूटर वहां क्यों पार्क किया, आपने सिस्टर को क्यों बुलाया, आपने पहले पुलिस को बुला लेना चाहिए था। तो कभी भी ये चीजें ना करे, विक्टिम ब्लेमिंग ना करे, उससे वो और डर जाएगी, सहम जाएगी और खुल के आवाज नहीं उठाएगी। ओके, so don't do victim blaming. Always support her, believe her, help her. Next slide. So that is the end of the module, which was the role of bystander. Okay, so again, just for your kind information, registration, pre-test, post-test and feedback are compulsory to get certificate for this session. Thank you. Now I will ask my colleague Dr. Manpreet Patel to take the proceedings forward. Manpreet? Yeah, thank you, Dipti. That was a lovely presentation. And sorry because my laptop isn't working, so I couldn't, put up my presentation. So sorry for that. Thank you once again. So I'll share my screen now. I'm not able to share the screen because the host has disabled participant sharing. So okay. I would like to thank Dr. Rekha ma'am for giving me this opportunity, Dr. Shanta Kumari ma'am and team DHEERA for this wonderful initiative. And I hope Dr. Manpreet is going to do the great job for the following sessions. Thank you. Okay, so let's move ahead with the next slide. Madam, first click on enable editing and then go to slideshow, madam. Yes. Okay. Is it okay? Start in slideshow, madam. First of all, you click on this enable editing, madam. Enable editing. Where is that? Editing. Right? Yes, ma'am. Now I go to slideshow. Yeah. Yes, sir. Okay, so bridging the gender divide. So after all those things that you all have heard about, our next presentation is on bridging the gender divide. Am I audible and is the screen seen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Great, thank you. Yes, ma'am. All right.
I audible? Okay, so as we know, we'll be speaking on bridging the gender divide. And for that, registration and Madam, pre-test. Am I audible? Sorry to interrupt you. Yes, madam, but it's not in slideshow, madam. It's not? In Oh, slideshow. it's showing a slideshow in me. Okay, just a moment. Huh? Okay. Yes, Manpreet, we are fine. We can see the slideshow now. No, still I've gone back. Okay. Yeah, Let me come back to the slideshow again. Got it. On the right hand side, there is a small little Yes, icon for slideshow. Yes, I got it. Yeah, it's there. Yeah, now you got it. Yeah. So sorry for the delay. Okay, so we here have next presentation on bridging the gender divide. It's an initiative by Dr. Shanta Kumari Madam, President of Foxy, India. So registration and pre-test we already have done. Post-test and feedback you will receive after completion of this course. Certificate will be awarded to all the participants on course completion and submitting our registration, pre-test, post-test and feedback. So what do you mean by bridging the gender divide? After seeing these names, ये सब नाम जानने के बाद आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं. शिवा सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है, लड़का है या लड़की? आप अपने चैट बॉक्स में इनके आंसर्स डाल सकते हैं. कशिश का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आता है कि ये एक लड़की होगी. निहार का नाम सुनते ही सबको लगता है कि ये नाम शायद लड़का होगा. तो हम जब भी कोई नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की. बट जेंडर्स आर व्हाट? दे आर नथिंग बट सोशली कंस्ट्रक्टेड कांसेप्ट्स. मतलब अभी शिवा नाम सिर्फ लड़के का ही हो जरूरी नहीं है. शिवा कैन बी अ नेम ऑफ अ गर्ल एज वेल. निर्मल, मैंने एक लड़की का नाम भी सुना है जिसका नाम निर्मल है. लड़के का नाम भी निर्मल हो सकता है. तो इसलिए सोशली हमारे सोसाइटी ने जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उसी बेसिस पे हमारे जेंडर्स डिसाइड होते हैं, नाम भी उसी तरह दिए गए हैं. अब जब हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मेल फीमेल के, तो जैसे लिखा है एक्टिव, कंसिडरेट, एग्रेसिव. तो एक्टिव, कंसिडरेट, एग्रेसिव जैसे हम सुनते हैं तो उनमें से एग्रेसिव सुनते ही हमें लगता है ये एक आदमी होगा, इट विल बी अ मेल. बट व्हेन वी लिसन टू सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इमोशनल, आर्टिस्टिक, जेंटल, तो हमारे मन में एक फीमेल की ही छवि आती है. आपको क्या लगता है? The conditioning of gender stereotypes. Stereotypes are so ingrained in our culture that they become a habitual response. Media and films reward violent male behavior. हमने अक्सर देखा है कि मूवीज के अंदर अगर कोई हीरो बहुत ही एक्टिवली वायलेंट है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है मूवी बहुत हिट होगी. That is right. But any violent behavior is not acceptable. Parents भी physical punishment यूज करते हैं लड़कों पर. अगर उन्हें गुस्सा आता है तो लड़कों को मारते पीटते हैं, लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते हैं. Parents are more likely to tolerate violent behavior in boys than in girls. तो लड़कियां भी अगर अग्रेसिव होने लगती हैं या अपना ओपिनियन देती हैं या अपने मन की कोई बात करती हैं तो उन्हें बॉसी कहा जाता है या बोला जाता है कि ये लड़की इररिस्पॉन्सिबल है, इसे तमीज नहीं है, बात करना नहीं आता है. तो आज हम जेंडर की बात इसलिए कर रहे हैं कि शुरुआत में आपने देखा कि वायलेंस जो होता है औरतों के अगेंस्ट वो किस प्रकार के होते हैं और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं. बट ये वायलेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो हमारे सोसाइटी में है, जेंडर बायस जो हमारी सोसाइटी में है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं सो दैट वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज. Stereotypical rules restrict personal choice, foster sexism, and create unequal outcomes. Now, is gender bias a social evil? आपको लगता है ये जो जेंडर बायस है लड़का लड़की का ये एक सोशल इवल है? मुझे लगता है डेफिनेटली इट इज अ सोशल इवल. व्हाई? इन इंडियन सोसाइटी women are oppressed. लड़कियों को, औरतों को दबाया जाता है, ऑफिशियली बोलो या अनऑफिशियली. और उनके बीच में जो अंतर है लड़का लड़की का वो बहुत यंग एज से शुरू हो जाता है.
गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू हाउस होल्ड चोर्स, घर का काम करने के लिए कहा जाता है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो लड़की ही करेगी, और चाहते हैं कि वो सबमिसिवली बिहेव करें। Emphasized when women are expected to leave work to raise kids. अगर कोई हस्बैंड वाइफ काम कर रहा है तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर बच्चे हुए हैं, बच्चों को बड़ा करना है, तो ये औरतों का काम है, आदमी तो बाहर जाके काम करेगा। मेल बेबीज आर प्रेफर्ड ओवर फीमेल बेबीज, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है फीमेल्स के बदले। जगह पे जहाँ पे आप काम करते हैं, वर्क प्लेस, वहां पे भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रमोशंस नहीं मिलती हैं और लड़कियों को। और अगर आप पे के बारे में देखिए तो पे हाइक और रेज भी फीमेल्स में इतना नहीं होता है जितना मेल्स में। और इसे पकड़ के चलते हैं सब लोग कि प्रेगनेंसी में वो छुट्टी लेगी, शी इज गोइंग टू गेट प्रेग्नेंट। उनको अगर सपोजिंग ज्यादा स्टाफ होता है तो फीमेल स्टाफ को एक्सक्लूड किया जाता है। एंड मैसिव वेज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। सो काफी डिस्क्रिमिनेशन अपनी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में देखने में आता है राइट फ्रॉम बर्थ। No woman is safe from sexual harassment. हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट भले वायलेंस ना हो, लेकिन हर कोई इस डर में, हर फीमेल इस डर में रहती है कि शी कैन बी सेक्सुअली हरास्ड, such as eve teasing and catcalling. Women are called goddesses, but even the tiniest of mistakes on their behalf makes them unworthy of being respected. Respect is all that anyone needs. Women do not want to be treated like goddesses. They want to be treated like humans. Now, it is not a level playing field. मतलब आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर एक लड़का है, उसे उसका पोडियम ज्यादा हायर लेवल पे है और फीमेल का काम। भले दोनों में इक्वल क्वालिटीज हो, दोनों के अंदर क्षमता एक जैसी हो, मगर फिर भी being a man, he has a upper hand. Some countries still don't give women the voting rights. Women still don't have equal access to education. Child marriages and dowry are still prevalent in our country. Women are not given equal opportunities bhi nahi milti hai. Women are made to work more, expected more out of them. One man's voice is worth more than that of many women. Women have less access to financial resources. Financially इंडिपेंडेंट फीमेल्स बहुत कम है हमारी सोसाइटी में, और फाइनेंशियल डिपेंडेंस की वजह से बहुत हद तक many women are suffering. There is not enough representation for women in many fields, including politics and leadership. All the genders have to work together as allies to create a gender neutral, gender responsive and equal society. अब यहाँ पे हम लड़का या लड़की की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक जेंडर इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए, जहाँ पे ना तो लड़का ऊपर है ना लड़की ऊपर है, both are at equal platform. So gender inequality and gender bias has to go away. Gender-based prejudice is not an issue of one gender. Boys, it is not enough to not commit violence. मतलब लड़कों के लिए ये है कि सिर्फ वायलेंस नहीं कमिट करना इनफ नहीं है, आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप करने के लिए रेडी होने चाहिए। To take 8 active steps to make sure कि कोई और आदमी इस तरह का वायलेंस या कोई भी inequality वाली बात ना करे। So what are those 8 other things that men should be doing? First is share the care. Women घर में अनपेड केयर लेती है, वो घर में घर संभालती है, बच्चों को संभालती है, हस्बैंड का देखती है, घर में इन-लॉज होते हैं उनका भी सब देखती हैं, देखभाल करती हैं, मगर इसके बदले में they don't take payment, they don't take charges for that. So it's an unpaid job that they're doing. Women spend energy and emotional labor at home with family instead of advancing career. अगर वो चाहे तो ये सब को ना कह के अपने करियर पे कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं, मगर this is a responsibility that she's taking. So similarly, a man should appreciate those responsibilities that she's taking, respect करना चाहिए जो भी sacrifices वो करती है उनके लिए, and he should offer to help whenever he can and encourage women to take up जो भी उनका interest हो। आप एक पिक्चर में देख रहे हैं कि वो लड़की कितने प्रेम से अपने मम्मी पापा को साथ में काम करते देख रही है। हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने, डॉक्टर रेखा मैम और डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि हमारे सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है कि हाँ भी अगर फादर हिट कर रहा है मदर को तो बच्चे वही देख के बड़े होते हैं, एंड अल्टीमेटली जब वो लड़की शादी होके जाती है और उसका हस्बैंड उसके ऊपर कोई वायलेंस करता है तो उसे लगता है शायद ये नॉर्मल है। Why? Because उसने अपने फादर को, अपनी मदर को हिट करते देखा था।
Physical abuse is very common and people yet don't know कि कैसे approach करें. So if we try to change this generation, then the future generations will change. Somebody had asked me in the chat box, and I just want to say that changes cannot happen overnight. It will take time. अगर आपकी generation इस चीज को understand करके changes लाएगी, I'm sure the next generation will be somewhere else. So next is hold yourself accountable. Boys will be boys. ये गलत बात है. Boys will be boys सही बात नहीं है. Just because लड़का है, so he has the right to do anything he wants is not right. आप अपने चीजों के लिए, अपने actions के लिए accountable भी हैं और responsible भी हैं. Respect men and women equally. Be aware of your own behavior. Make sure that you're open to criticism. Change yourself when you see toxicity. So this is for boys कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास आपके friends are doing a wrong job or they're not behaving properly with women, तो आप उन्हें point out कीजिए. Point out करने से आप कम नहीं होंगे, but आप एक new system generate कर रहे हैं, एक new generation create कर रहे हैं. Change the notions of traditional masculinity. Example, कोई बोलता है, अरे चल man up यार, क्या बच्चे जैसे रो रहा है, क्या लड़की है क्या, चूड़ियां पहन रखी है क्या, don't cry, be strong. This is wrong. Even men can cry. उनके भी emotional breakdowns होते हैं. So there are many boys, बहुत लड़के होते हैं जो बेचारे emotional breakdown होते पर रो नहीं पाते सामने because सब लोग उन्हें छेड़ते हैं. That is wrong. If you are a human, so you have emotions, and emotions लड़के में भी होते हैं, लड़की में भी होते हैं. Treat everyone the same way, regardless of your gender. Gender is just created by society. There is no difference in both men and women. Allow yourself the freedom to break the norms and challenge your stereotypes. Question those that do not allow you to challenge stereotypes. Do not excuse men just because they're men. Make the sensible male fashionable and not the alpha male. Men cry, men break down, men get anxiety. They have emotions. लड़कों को insecurities होती हैं. Men do get abused. Yes. Men have mental illnesses. It is not unmanly to struggle. So let us support men. Let us encourage men. Don't belittle or silence them. Men struggle too. Sensitive men will change the next generation. Men should respect others' choices. Matlab, when someone makes you uncomfortable, ask yourself why. It is about examine your biases. Consider the circumstances that make your life different from yours. Do not judge or shame them for their choices. Understand consent. Consent का मतलब क्या है? Freely given, reversible, informed, enthusiastic, specific. I love fries. So our phrases like हंसी तो फंसी true. So consent क्यों बात कर रहे हैं? जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है या उसको फॉलो कर रहा है, अब लड़की ने पीछे टर्न करके अगर थोड़ी स्माइल दे दी और वो कहे हंसी तो फंसी, उसका स्माइल करना does not mean that she is saying yes. No, she has not said yes, right? So consent का मतलब है yes और no. Yes बोलेगी तो ही yes होगा. Just because she's smiling or she's not saying anything does not mean that she is saying yes. The clear consent is the word yes, nothing else. आप अपनी तरफ से धारणा मत बना के बैठिए कि हाँ उसने टर्न किया, उसने मेरी तरफ देखा, उसने मुझे देख के स्माइल पास किया, इसका मतलब कि उसकी भी हाँ है. नहीं, जब तक वो हाँ ना बोले तब तक कोई हाँ नहीं है. Consent is very important. She was asking for it. Why couldn't you? Boys will be boys. इस तरह के statements कभी भी सही नहीं होते. And never victim blame. कभी भी victim को blame नहीं करना है. So now let's talk about calling out sexism and harassment. All women experience sexual harassment at least once in their lifetime. All women experience sexism once a week. एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था प्री टेस्ट में कि अगर गाड़ी चला रही है, अगर एक लड़का लड़की गाड़ी में जा रहे हैं, somebody overtakes और बराबर not properly overtaken and didn't drive properly, तो लड़का बोलता है जरूर लड़की ड्राइव कर रही होगी. Why is that so? इस ड्राइविंग रिलेटेड कि लड़का अच्छे से ड्राइव करता है और लड़की अच्छे से ड्राइव नहीं कर सकती. ड्राइविंग इज अ स्किल which can be learned by anyone. But this is sexism कि लड़की ही ठीक से ड्राइव नहीं करती हैं, उन्हें ओवरटेक करना नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता है. So call out such behavior in a safe and respectful manner. Be an active bystander.
Do not excuse friends, relatives, or co-workers. If you feel that you are in a group and if आपका friend किसी लड़की को छेड़ रहा है, तो उसे रोकिए. Just because वो आपका friend है या आपका cousin है, does not give you a reason to not stop him. You should stop him. Whenever you see sexism happening, you should see it first of all, name it and stop it. Don't excuse anyone just because they're your friends or your relatives or co-workers. Challenge gender stereotyping. Question your own stereotyping and prejudices. Challenge any stereotypical notion of gender, like women are not good at driving. Yes, we spoke about that. Counter the argument with facts. Believe the survivors. Previously भी discuss किया है कि जो भी survivors होते हैं, victims होते हैं, उनके तरफ आपका approach बहुत delicate और intricate होना चाहिए. आप कुछ और नहीं करें, आप उन्हें support तो कर सकते हैं by at least listening to them, giving them a shoulder, believing in them. Every time a woman speaks about her experiences, she is not believed. So ये toxic culture flourish करता है. People want to change the society. Society किससे बनी है? हम जैसे लोगों से ही तो बनी है. तो जब हम जैसे लोग अपनी धारणा चेंज करेंगे, अपनी थिंकिंग चेंज करेंगे, तभी तो सोसाइटी चेंज होगा. So it will take some time. So when you hear a survival story, listen, believe, and support. Be an ally and offer unconditional support to the survivor. So if you have a friend who's been through something, या वो कुछ कहना चाहती है, तो आधा टाइम तो औरतें अपनी आवाज ही नहीं उठाती, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो किसे कहे. She cannot speak to her own family members if she's undergoing a physical violence. She cannot speak to her friends if somebody is troubling, if some guy is troubling her, if some guy is troubling in the school, because हम ही सपोर्ट नहीं करते हैं. और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सोसाइटी शुड सपोर्ट, पीपल शुड सपोर्ट. फर्स्ट यू पीपल शुड बिकम अ गुड सपोर्ट टू ईच अदर. Support. Women should support women. Girls should support girls. And then guys should help in. Now, if you go and see on Google पे जाएंगे, अगर आप you will search like women should, तो सबसे पहले 3 चीजें में आएगा. Women should stay at home. Women should not work. Women should be seen and not heard. So we need to change this dialogue. When we search for women should, it should not come stay at home. Women should work. Women should take care of their health. Women should be educated. This should be the searches and not should stay at home, not work. So how can you change the narrative? By making a gender neutral society. We don't want men to be above women or women to be above men. We want both of them at equal levels. Women, you can be anything. You can do anything. So the choice is yours. Have the faith, be strong, and raise your voices. So we end our presentation here. So registration pretest is necessary. Post-test feedback will follow. Certificates will be awarded to all participants on course attendance and submission of registration pretest post-test feedback. Courageous together, say no to violence against women. Hashtag DHEERA together. Let's tweet together, building a voice. Our target is 1 lakh plus tweets. So please add your courageous voice to the conversation. With this, I end my presentation. So I move on to my next. Am I audible in my screen seen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yeah. Let's start in slideshow, madam. Yes. Coming to our next presentation, which is on decoding peer pressure. So
Decoding peer pressure, our main highlights are going to be identifying a toxic environment. Then we speak about good versus bad touch, the concept of consent, and the power of no. Registration, pre-test, post-test, and feedback you have to complete. Certificates will be given to you at the end on completion of attendance of the course and submission of registration, pre-test, post-test, and feedback. So what is peer pressure? हम सब जानते हैं कि it can be any influence that your friends have on each other to conform to behaviors and personal habits of a group. So most of the time, this peer pressure is too subtle. मतलब हम जिस तरह की संगत में रहते हैं, दोस्तों की कंपनी में रहते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी नहीं आता. काफी समय तक अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रहें, तो उसका धीरे धीरे हम पर असर आता है. It is very subtle, but it has got an enormous effect on us. हमारे डेवलपमेंट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. तो किस तरह के peer pressures होते हैं? What are the different types of peer pressures that we can be exposed to? One is spoken, when one friend openly persuades another. Yeah, जैसे कि supposing if your friend tells you to do something directly, कि ये काम कर दे करके, so then you listen to him, even if you feel that thing is not right, but still because आप group में हैं and you're under the pressure, आप धीरे धीरे उनकी बात सुन के वो certain acts करना शुरू कर देते हैं. फिर आता है unspoken, when one of your friend is persuaded by exposure to behavior. Now this unspoken peer pressure could be good and could be bad as well. Supposing if you are standing in a group, आप लोग रास्ते के साइड में खड़े हैं और आपने देखा कि एक ओल्ड मैन है, he wants to cross the road, तो आपका एक फ्रेंड जाता है और उस बंदे को हेल्प करता है ओल्ड मैन को रास्ता क्रॉस करने के लिए. So a couple of times you see that your friend is doing some good deed, so you are exposed to this behavior and you will notice कि आप खुद भी इस तरह के deeds करना शुरू कर देते हैं. So it's an unspoken one. Just by seeing your friend do it, you also start doing it. But इस तरह से आप कुछ गलत चीजें भी pick up कर सकते हैं. So this is an unspoken peer pressure. एक होता है डायरेक्ट प्रेशर, जैसे कि आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बैठा हुआ है और सब लोग सिगरेट स्मोक कर रहे हैं. अब सिगरेट स्मोक करते करते सिगरेट आपके बाजू में जो फ्रेंड बैठा है उसके हाथ में सिगरेट है. नाउ दैट गाय सडनली गिव्स अ सिगरेट टू यू, तो आप एकदम से चौंक जाते हैं कि क्या करूं. आपको ना तो उन्होंने पूछा कि विल यू हैव और डू यू टेक, you smoke, no questions, sit directly, he give it to you and you were like, okay fine, you just take it, and instead of refusing it, you just smoke, even though aap nahi smoke karte hain, but just because everybody is having it and you're just offered suddenly, you just take it. So this is direct peer pressure. And indirect peer pressure, when a peer overhears somebody gossiping and changes the behavior due to indirect pressure. कोई gossip चल रही है and वो gossip को change करना है, तो आपका friend कहता है नहीं ये वैसा हुआ था, and आप जानते हैं कि gossip गलत है, उसको तोड़ा मरोड़ा गया है, and you don't do anything. Why? Because आपके friend ने वो सब changes किए हैं, so आप भी वो गलत चीज को आगे forward कर रहे हैं. So it's an indirect peer pressure. Negative, when a friend is pressured into behavior that is against the moral code. Yes, if you see that your friend is actually stalking a girl, which is not right, it is not good. You should be stopping your friend. ये गलत है, उस लड़की को परेशान मत करो. But then because of the pressure of friends and the circle, you don't say anything. You know it is wrong, but still you are not saying anything and you just go ahead with that thing. What is positive? जब कोई फ्रेंड आपको अच्छे बिहेवियर के लिए इन्फ्लुएंस करता है, हेल्दी बिहेवियर के लिए इन्फ्लुएंस करता है, रिस्पॉन्सिबल, जैसे मैंने कहा कि आप किसी को हेल्प करते हैं, किसी को स्टडीज में हेल्प करते हैं, यू स्टार्ट डूइंग गुड डीड्स बिकॉज योर फ्रेंड सर्कल इज गुड. सो किस तरह का सर्कल है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आप नोटिस नहीं करेंगे कुछ चीजें, अगर आपका सर्कल सही नहीं होगा तो ग्रेजुअली धीरे धीरे आपकी सोच वैसी बन जाती है, आपके एक्शंस वैसे बन जाते हैं, आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है ओवर कपल ऑफ ईयर्स. So it is very important that you have to learn to know what is right, what is wrong, and stand up for what is wrong, point out what is wrong. If you will not speak up, you will end up becoming like one. What is signs of toxic environment? Your friends make you feel bad. अगर आपके friends आपको अच्छा feel नहीं कराते हैं आपके बारे में, तो वो आपके लिए सही है. Your friendship is on their terms. वो जैसे कहते हैं वैसा ही करना है. Otherwise they don't like it. So then that is not a healthy group to be in. You're never sure where you stand. आपके खुद का status क्या है इस group में, आपका say है कि नहीं है, वो भी आपको नहीं पता है. Gossip constant चलता रहता है. ऐसा group is never very helpful. A healthy group is the one जहाँ पे आप
के बीच में healthy discussion हो, something about future, about studies, building something and not breaking something. Destruction नहीं हो रहा है. So effort is one sided. मतलब कि अगर कोई ग्रुप है जिसमें आप एफर्ट्स ले रहे हैं, फोन करते हैं, मिलने जाते हैं, लेकिन सामने से वो कभी कॉल नहीं करते, आप 4 बार करेंगे, वो 1 बार करेंगे, तो आप एफर्ट्स ले रहे हैं उस ग्रुप में रहने के लिए या उनके साथ फ्रेंडशिप रखने के लिए, वो नहीं ले रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट पे आपके लिए सही नहीं है. If they don't respect your boundaries, if supposing you're going out for movie and you said ki my parents have told me I should be back by 10 o'clock, but then they force you to go for a late night movie till 12 o'clock, so they don't respect the boundaries, so those are not your true friends. You feel pressure to do things you don't want to. There is a competition to be popular. अगर कोई पॉपुलर ग्रुप है उसमें आपको सरवाइव होना है, तो आप कई बार गलत चीजें करते हैं, आप अपने सही मायने में you are pretending to be there, but you are not the one who you think you are at that time. So you're trying to be fake to become popular with them. Yeah, you're terrified कि आप एक गलती करेंगे और वो लोग आपको छोड़ देंगे. And any group which brings about the worst traits, आपके अंदर जो भी सही चीजें, qualities को enhance करने के बदले आपके worst qualities को जो बाहर निकाले, वैसा group आपके लिए सही group नहीं है. It means that is a toxic environment, and it is better for you to move out of such toxic environment and such friends, because they are not your friends but fake friends. So how to avoid uncomfortable situations? Avoid going out with strangers, पहली बात. And make sure कि आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो भी है बड़े हैं, तो उनको पता हो आप कहाँ जा रहे हैं. Take a phone with you so that if anything happens, so you can call them up. And there is something called WhatsApp पे वो location sharing होता है. So you can put your अपनी location sharing को on रख सकते हैं so that your parents are aware where you are exactly. You should respect others people's boundaries as well. अपनी खुद की एक बाउंड्री ड्रॉ कीजिए कि मुझे यहाँ यही करना है, मेरा टाइम यही है, मुझे ये करना है तो यही करना है. Not because my friends are pushing me, pestering me, so I change my boundaries. No, you should draw your boundaries. Be confident to say no to anything you're not comfortable with. If you feel कि कुछ भी गलत सेंस करते हो, आपको जरा भी लगता है कि this is not right, you can dial the police number 100 if you feel a sense of danger. Now, you should be able to differentiate कि सही लोग कौन है और सही कौन नहीं है, कौन से people, कौन से बच्चे, कौन से friends ऐसे हैं जो toxic होंगे, आपके growth के लिए अच्छा नहीं है. So boys should avoid such boys who are against feminism. Boys should avoid such boys who are rude to their mothers. जो लड़के अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो आपकी फिजिकल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, या आपको प्रेशराइज करते हैं न्यूड्स भेजने के लिए, या जो हर बार झगड़ते रहते हैं, आपको ऐसे लड़कों की संगत अवॉइड करनी चाहिए. या जो लड़के बहुत बार गाली गलौज करते हैं, उनके सिंपल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत गलत गंदी स्लैंग्स होती हैं, ऐसे लड़कों के संगत में नहीं रहे. Boys who comment on a girl's appearance, हर बार लड़की कैसे दिख रही है, क्या कपड़े पहने हैं, हर बार उसके ऊपर ओपिनियन देना गलत बात है. या जो भी रेप के जोक्स करते हैं लड़के, वो लड़के सही नहीं है. तो लड़कों के ऐसे लड़कों की संगत अवॉइड करनी चाहिए. And for girls, they should avoid girls who think it is unmanly to cry. जो लड़कियां सोचती कि लड़के जो रोते हैं वो मर्द नहीं होते हैं. No, you should not think like that. या जो लड़कियां स्लैप करती हैं, मारती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को, हिट करती हैं, या who are totally materialistic, पैसे के पीछे, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे भागती हैं, या जो लड़कियां अपनी अदर गर्ल्स को बुरे नाम से बुलाती हैं, गलत वे से स्लैंग्स यूज करती हैं. Girls who don't respect your physical boundaries, girls who call you a girl thinking it's an insult, girls who don't think men can be victims of abuse and rape. You should avoid such people who are not healthy for your growth, for your mental or physical growth. Boundaries, learn to put yourself first. For all the students out here, learn to put yourself first. Set boundaries you are comfortable with. बाउंड्रीज का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई चीज सही नहीं लग रही है, तो आप किस तरह से ना बोलें उनको, ताकि वो रूड भी ना लगे और आपको भी ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रेट भी ना करके उनके साथ पंगा लिया है. So I will end this phone if you continue to shout at me. Yeah, you can say I can stay for half an hour, but not more than that. Thank you for your offer. Unfortunately, I cannot make it. Yeah, I'm not comfortable discussing that. Please do not discuss it with me. Yeah, I need time to think about it. I'll come back to you.
या अगर कोई emails सही नहीं तो आप लिख सकते हैं I don't respond to work emails at the weekend. अगर कोई आपको co-worker परेशान कर रहा है बार-बार मेल्स करके तो आप उनको बोल सकते हैं work emails I don't respond on at the weekends. I'm not comfortable with that. If you do it again, I'll have to leave. कोई किसी का behavior पसंद नहीं आ रहा है तो I respect your opinion, but this is my life and my decision. कोई आपको बहुत अपने ideas दे रहा है, opinion दे रहा है, force कर रहा है सोच बदलने. You can say this is my I respect आप जो भी मेरे साथ discuss कर रहे हैं आपकी opinion को मैं respect करती हूँ. But मेरा life है and it's my decision. So we come next to good touch versus bad touch. आप सभी को पता है कि गुड टच क्या होता है बैड टच क्या होता है जो बैड टच होता है वो सर्टेन एरियाज होते हैं बॉडी के ऊपर जहाँ पे कोई भी आपको छू नहीं सकता नॉट इवन योर फ्रेंड्स ओके एंड गुड टच इज वेयर यू कैन touch with your friends, that is your hand. आप handshake कर सकते हैं. So peer pressure can make it feel like all touch is acceptable. आपके फ्रेंड्स के साथ में हो सकता है प्रेशर में आके वो आपको से फील करा सकते हैं कि बैड टच वाले एरियाज में टच करना इज ओके. No, nothing is okay. There are certain areas when nobody can touch you, not even your friends. So speak out. आपको लगे कि सही जगह पे कोई टच नहीं कर रहा है या आपको uncomfortable फील करा रहा है, you should speak out. You should have the power to say no. And no means no. The concept of consent has to be understood by all of you. Consent is permission for doing anything. So always ask for consent. Do not assume. आप उसको कंसेंट को पकड़ के नहीं चल सकते जैसे हंसी तो फंसी या उसने मुझे स्माइल दिया इसका मतलब उसका हाँ है उसने मुझे टर्न करके देखा इसका मतलब उसका हाँ है नहीं you cannot assume it. It is always yes or no and whatever it is you have to respect the consent. Never coerce your consent. No means no. Turning away means no. I don't want to means no. Shoving you away means no. I don't feel like it means no. So yes means one thing only. Freely given consent where both persons' needs, wants, and desires are an integral part of the interaction. Stand up to peer pressure. Just say no, no, or nah. Leave the scene and say, see you later. Make up an excuse like, I just remembered I have to do something. और आप कोई भी joke use करके आपके peers जो आपके friends pressurize कर रहे हैं आपको कुछ करने के लिए जिसमें आपको कोई interest नहीं है या आपको सही नहीं लग रहा, you just give any excuse you wish like. मजाक में बना दीजिए या directly no बोल दीजिए या subject change कर दीजिए, but do not give in to peer pressure. Remember to always listen to your gut instinct. Don't say maybe if you want to say no. Dreaming of a better future for our future generations. You all know this girl, Malala. I want every girl to know that her voice can change the world. Yes, she had raised her voice when she was a teenager. She has received Nobel Peace Prize laureate at a very young age. And अगर वो अपनी आवाज पाकिस्तानी तालिबान के अगेंस्ट नहीं उठाती, तो आज इतने changes नहीं आते. When they had stopped education for all the girls in that area, they had prevented women and girls from speaking. She raised her voice. So raising your voice is the first step. The world will eventually change behind. The registration and pre-test, you have already given post-test and feedback. You'll be receiving certificate will be awarded to all participants and course attendance and submission of registration, pre-test, post-test and feedback. Thank you so very much to the principal of St. Xavier's Convent. Here we end our top session. I'm thankful to Dr. Rekha Srivastava for arranging and the principal of St. Xavier's Convent for joining us in here with all the respected teachers and all the students. And thank you very much for having me here, Dr. Rekha ma'am. So here we end our session. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. All benefit from it, and it's a small step by our Foxy president. Thank you. Yes. Rekha ma'am. Yeah, so do we end? Okay, so we end our session here. Thank you all. I think all have left. Thank you, all ma'am. are here.
all are here, and we are very thankful to the principal and the students for joining on with us. And we hope कि जो भी आज आपको information मिली है, this will be useful for you for your future use. I think chat box में there was. Thank you all for joining us. Yeah. Okay. See? Thank you, ma'am, for a nice session. Thank you. So we'll sign off now. Yes, ma'am, we can. Okay. Okay. Yeah. Thanks. Okay. Bye. Thanks for making me the part of this. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Madam And Manpreet? you learn from the, presentation. Yes. And Madam, implicate it, apply it to please your tell them, life. you know, after leaving the meeting, they'll get a link. They'll Yes, get a ma'am. pop-up actually. They have to Yeah. click on continue, then they'll get a post-session feedback Yes. form, madam. They have to fill and they have to submit. Okay. So after completion of this thing, they'll be getting a link, right? After they leave the meeting, they'll Yes, get they'll get a link. pop-up, madam. Okay. Stay on and continue. They Okay. click on continue, then Right. they'll get question and answers thing. Okay. So after completion of this thing, आप बंद मत करिएगा, एक पॉपअप आएगा, उस लिंक आएगा, तो वो लिंक पे क्लिक करना है आप सभी को, और उस पे आपको फिर आगे जाके सर्टिफिकेट इश्यू होगा. So don't close the window. अभी लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है आप सभी को. After they leave the meeting, as soon as they leave the meeting, the pop-up will come, fill in the post-test form and feedback, and then immediately you will be directed to that link. Okay? Okay. I think they've understood. We'll just write in the chat box now what it means. So Yeah. So they will have to leave the meeting, Manpreet, और फिर उसके बाद वो pop-up आएगा. चलो, bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am.